তারপর মানে পায়ের থেকে পুরো কোমরে দিয়ে আর এই বেটিরে বইতে বলে বড়টার বলে তার বড় ভাইয়ে হাতু মস্কাই গেছে মানে ভারীকে বেশি বইতে মানে কি বইতে কি বইতে মানে ধরাধরি করতে না একদমই তো লড়তে পারে না হ্যাঁ ধরাধরি করে উঠানি ওকড়া বেটার হাত হুইলচেয়ার নাই হুইলচেয়ার কিনে নাই হুইলচেয়ারের কথা কইতে পারতাম না কেন হুইলচেয়ার তো একটা কিনতে পারতো এতদিন আগেই ওই হলিতে কইয়া একারা আরো মালিশ মিলিশ কই যায় এটা মালিশ কেন করছে কে করছে মালিশ জানেই করছে তারাও হইলো আমাদের বড় জেম্বুর মতো বেশি বুদ্ধিমান আমাদের যে রুবির জামাই যে সেরকমই বুদ্ধিমান ওরা সময় মতো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় না হ্যাঁ এখানে তুমি কি কইছো হোমিওপ্যাথি খাওয়ায় হোমিও না কি পাতি কই যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ না কি খাওয়াইতেছে কইলা তারা মারে হোমিওপ্যাথি দেখাইতেছে মাঝখানে দেখাইতেছিল না কারে কইলা জানি হ্যাঁ তো অ্যালোপ্যাথি দেখায়া ঠিক করানো যায় না কেমনে হইব যখন মেন ডাক্তারই যাইতেছে না ওরা যাইতে চাইতেছে না तो কেমনে হইব हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डे गेमिंग में आ गया मैं फुटबॉल কোন ডাক্তার কে দেখাইব কারে দেখাইব না না আমি নিয়ে যাব না তোমার ওই ডাক্তারের কাছে লাগলে তুমি এখানে যাইবা अनिश अग्रवाल গেছে ওই ডাক্তার না মামনের ভালো হয়েছে মামনের কি আছিল না আছিল তুমি জানো না তোমার এটা এখানে গিয়ে ভালো হবে না ডাক্তারে তোমার সামনে নিজেই বুঝাই দিছে এটা প্র্যাকটিক্যালি ঠিক হওয়া বেমার এটা ঠিক হইব না যেটা একবার ক্ষয় হয়ে গেছে ওটা তুমি আনতেই পারবা না তুমি যত ইনজেকশন দাও হয়ে দাও ব্যথা উঠবো তুমি ওষুধ খাইতে লাগবো ডাক্তার দেখাইতে লাগবো ট্রিটমেন্টে থাকতে লাগবো অনেক ব্যথা হইব সহ্যর বাইরে যাব লাস্ট অপারেশনই করতে লাগবো নাহলে ওষুধ খায় ইনজেকশন মেরে থাকতে লাগবো এই জন্য ডাক্তারে কইছে নিজের সাবধানতা কি যেগুলা তোমার কোয়া হয়েছে ওগুলাই তুমি নিজের সাবধানে ভারী জিনিস উঠানো এগুলা বাদ দেওয়া যাতে আরও বেশি দিন তুমি থাকতে পারো বেদনা ছাড়া অল্প বেদনা থাকবই এটা তোমার শরীর ছাড়বো না তাই সবার বেমার আলাদা সবার ট্রিটমেন্ট আলাদা হ্যাঁ তো তোমার বেমার আলাদা তোমার ট্রিটমেন্ট আলাদা না তোমার ট্রিটমেন্টে মাসাজ কাম আইব না তোমার ট্রিটমেন্টে কোনো ইনজেকশনের কাজ আইব না তোমার ট্রিটমেন্টে কোনো ক্যালসিয়ামের ওষুধের কাজ আইব দিদার ক্যালসিয়াম খাইলে শুকাইব মানুষের হাড্ডি যদি একবার শুকায় যায় কোনোদিনও আর হাড্ডির জল ফিরে আসে না ওইটা হলো এক্সট্রা আর্টিফিশিয়ালি ঢালতে লাগবো ওই যে ইনজেকশন দিয়া বা দিয়া তখনই ঢালতে হয় Rahima bro friendly come on Rahima bro friendly I can play but the problem is the game will lag still if you want to play I will make a room ज्वाइन कर लो गेम लैग होगा लेकिन ठीक है এই যে ডাক্তার যে এই ডাক্তারের এখানে তুমি ওষুধ খাইতেই থাকতে লাগবো সারা জীবন খাইতে লাগবো ভালো হইবা না খাইয়াই থাকতে লাগবো এই হোমিওপ্যাথির ওষুধ এরকমই ভালো হওয়ার সিস্টেম নাই অ্যালোপ্যাথিকে তুমি আরাম পাইবা আর নিজের সাবধান এইগুলা যখন হাড্ডির প্রবলেম হয় তখন নিজের সাবধানতাই সবথেকে বেস্ট ডাক্তার তোমার ডাক্তারে যেগুলো মানা করছে সেগুলো তুমি করা বাদ দিতে লাগবো যতটুক না পারো তুমি করতে ছাড়তে লাগবো করা ততদিন তুমি বিনা অপারেশনে বিনা একদম অজস্র ওষুধ ছাড়া চলে যেতে পারবা ব্যথার ট্যাবলেট তো তোমার আমি কইছি তুমি যাইতেই চাও না ডাক্তারের কাছে আমি কি করুম
তোমার পা ঝিনঝিনে আমি কইলাম চলো যায় ডাক্তারে দেখে, ডাক্তারে কোনো উপায় দিব কইব বা ওষুধ দিব। হ্যাঁ ওই ডাক্তারে তোমার সাজেশন দিছে, তোমার ইচ্ছা এখন তুমি ফালাও না ফালাও তোমার ইচ্ছা। হ্যাঁ তো কইছেই আমি চাপা করে দিই, ওটাও দেখা নাও কইরা 3-4 দিনের ভিতরে যদি কইমা যায় তো ভালো, আর নাহলে তো ফালাইতেই লাগবো। ডাক্তারে উপায় দেয়, উপায় তুমি নিবা না নিবা ওটা তোমার কথা, ওটা ডাক্তারের কথা না। ঠিক আছে ওইটা এখন ঠিক আছে ভালোই তো, ডাক্তারে তো কইছেই 3-4 দিন পরে যদি ব্যথা একদমই না কমে তখন আবার আইবা, তখন লাস্ট উপায় ডাক্তার দাঁত ফালাইতেই লাগবো। এখন তোমার যখন একটু নড়াচড়া করে ক্লিন করে ওগুলা লাগানোতে আর ইয়েতে কমছে, অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াতে ব্যথা, ভালো কথা। আমারও তো ডাক্তারে কইছেই না দাঁত ফালাইতে, কিন্তু আমার যখন ওই ক্লিন করানোর পরে ব্যথা কমে গেছে এই জন্য আমি আর গেলাম না। এখন যদি ভবিষ্যতে আবার ব্যথা উঠবো তখন তো যাইতেই লাগবো, তখন ডাক্তারে যা পরামর্শ দিব ওই হিসাবে চলতেই লাগবো। এখন তোমার পায়ে ঝিনঝিনি হয়, তুমি যাইতে চাইতেছো না, পরে যখন তুমি সহ্য করতে পারবে না তখন তো তুমি নিজেই যাইবাই। হ্যাঁ তো ওগুলা বেটায় তোমারে উপায় দিছে, তোমার যে লইতেই লাগবো তার কোনো মিনিং নাই, কইছে ও আপকা মর্জি হ্যাঁ এটা কইছে, তুমি এটা লইবা না লইবা এটা তোমার পার্সোনাল ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমারে কয় নাই যে হ্যাঁ তোমার বেমার হয়ে গেছে নিয়েই নাও, ও কইছে এটা তো ব্যথা কমবো না, এটা এরকমই থাকবো, ব্যথা হইতেই থাকবো তো। হ্যাঁ তো ওরকমই থাকবো। হোমিও ডাক্তারের পয়সা বেশি দিয়া তুমি খাইতে পারবা, অত টাকা পারবা তুমি প্রতি মাসে 3000 টাকা ফালাইতে? যদি তুমি পারো তাহলে চলো আমার লগে, আমার কি প্রবলেম আছে? তোমরা হোমিও কইরা করে বেশি বাইরে যাও, আমারও দেখাই যা তাইলে হোমিওতে, কেন আমারে কইছো মেডিকেলে যা, দেখালি তাও হের গেছে নিয়ে গিয়ে আমারে। মেডিকেলেও আছে কিন্তু মেডিকেলে তোমার সময় লাগবে, এই জন্য আমি তোমার স্পেশালিস্ট দেখাইছি, হ্যাঁ অনেক বড় ডাক্তার, বাইরে বাইরে যায়, দিল্লি মুম্বাই এগুলোতে গিয়ে হ্যাঁ অপারেশন করে দেয় মানুষের, হ্যাঁ সার্জারির ডাক্তার। সার্জারি ডাক্তারের সব থেকে বেশি উপায় জানে তোমার মেডিসিনের ডাক্তার থেকে, কিন্তু সার্জারি ডাক্তারের সব মানুষের কাটটা পুটটা দেখে ভিতরে কি আছে, তো ওদের কাছে বেশি ইয়ে থাকে, নলেজটা বেশি, সার্জারি ডাক্তাররা নলেজ বেশি থাকে মেডিসিনের ডাক্তার থেকে। যারা কাটাছিড়া করে তাদের নলেজ বেশি থাকে, কারণ তারা ভিতরটা দেখতে পারে, সব পেশেন্টের কী ধরনের হয় কি না হয় সব বুঝতে পারে, কি করলে ভালো হয় এটাও বুঝতে পারে। মেডিসিনের ডাক্তার তো মেডিসিনেরই ডাক্তার। খালি উল্টা পুল্টা কথা কও যে এই জন্য আমার পছন্দ হয় না। তোমারা কইছি এখানে চলো, তোমার কি ডাক্তারে তো তোমার ওই তখনই কইছিল যে এটা আস্তে আস্তে পাইয়ে যাইব, কয় নাই তোমার ডাক্তারে? আবার ডাক্তার কইছে না নাকি যে যদি আর বেশি পেইন টেন হয় নিয়ে আইবা, তখন আবার দেখুন। বর্তমান তো সাবধানেই চলতে লাগবে, যখন তোমার আগের থেকেই ডাক্তারে কয়ে দিছে তখন তুমি কেলিগা এখানে চিল্লাইতেছো। কিছু মানুষে না বুদ্ধি থাকলেও লাগাইতে লাগে না, কিছুটা বুদ্ধি ছেড়ে দিতে লাগে, বুঝছো না? তোমার বুদ্ধি হইতে পারে অনেক প্রচুর, আমারও হইতে পারে অনেক প্রচুর, কিন্তু কিছু কিছু কাজে আমরা আমাদের নিজের বুদ্ধিটা ঘরে রেখে যেতে লাগে, বেশি উস্তাদি মারতে লাগে না। বেশি উস্তাদি মারা আমিও পছন্দ করি না, আর আমি নিজেও মারি না। ক্যালসিয়ামের ট্যাবলেট খাইলে কি হয়,
জাস্ট তোমার হাড্ডিটা যেগুলা বাচ্চা আছে ওগুলার একটু বেনিফিট হইব, কিন্তু সেরকম কিছু হইব না। তোমার যেটা ক্যালসিয়ামের ট্যাবলেট লেখা দিয়েছে ওটা এখন আমি তোমার খাওয়াবো না, এই জন্য আমি তোমার কইতেছি যে চলো ডাক্তার দেখাই আইবা, ডাক্তারের লগে আবার পড়াশোনা, কারণ কি অনেক দিন হয়ে গেছে এগুলো বেমার, মাঝে মাঝে গিয়ে ডাক্তারের লগে পরামর্শ করতে থাকতে লাগে যাতে স্থিতি খারাপ হয়ে না যায়। একদমই ডাক্তারের লগ ছেড়ে দিবা তখন তো তোমার সিচুয়েশন যখন বহুত বেশি খারাপ হবে তখন তো আরো প্রবলেম হইব না তোমার। বেমার হইলে বেমারের লগে যুদ্ধ করতেই লাগবে, টাকা দিয়েই হোক আর এমনিই হোক। Great ball if he can get there. 2 added minutes has been indicated. Hello MABD, welcome to the stream. Thank you for joining. How are you? কেমন আছো? Welcome. एक ही गोल हुआ है, लैग थोड़ा सा कम ही दिखा मुझे अभी तक। सही है, वेरी गुड। তুমি খালি অল্প যদি মাইনা চিন্না চলো তোমার বেদনা কমবো। হ্যাঁ, পুরা সারবো না, পুরা কোনোদিনই সারবো না। এই যে যেটা তোমার হয়েছে কোমরের প্রবলেম, ওটা পুরা কোনোদিনই সারবো না। তুমি যে ভাবতেছো অ্যালোপ্যাথি খাইলো সেরা দিব, তোমার সামনে না তোমার সব বুঝাই দিছে, তোমার কি কথা মাথায় ঢুকে না? তুমি তো 10 ক্লাস পড়ছো, তুমি তো এরকম না যে অলগর্দা বলরাম তোমার কিছু কইলে তুমি বুঝবাই না। তুমি তো আর অন্য না যে শিক্ষিতই না, তুমি তো শিক্ষা দীক্ষা পাইছো। তো যখন ডাক্তারে তোমারে বুঝাইয়া কইলই ওই সময় যে এটা ঠিক হইব না, এটা তোমার নিজের উপরে, তুমি যত সাবধানে থাকবা ওইটা অত তুমি ওইটারে পালতে লাগবো। তুমি উল্টা পুল্টা করবা, তোমার এটা বাইরে যাব। আর একদমের থেকে একদম লাস্ট উপায় হইলো অপারেশন করে ওই হাড্ডিটার মধ্যে ওখানে একটা লোহা লাগাই দেওয়া, যাতে ওইটা নড়াচড়াই হইব না, যাতে তোমার বেদনাও হইব না, কিন্তু কি তখন মোবিলিটি কমে যাবে। বাস অতটুকুই। মোবিলিটি মানে কি নড়াচড়া তুমি বেশি করবা না, তখন অল্প লিমিটেড নড়াচড়া হইতে করতে লাগবে, খালি কি বেদনার থেকে একটু ছুটকারা হইব আর কিছু না। বাস এইটা যখন তোমার বুঝেছে সামনে থেকে, তখন তুমি কোশ্চেন করতা। আর বাকি যে ইনজেকশন এগুলা কইছে এগুলো হলো পরের, যদি লাগে লইতে পারো। ওগুলা লইলে কি হয়, ধরো আরো যতগুলা হাড্ডি আছে ওগুলো অল্প কম জলদি ক্ষয় হইব, এরকম আর। তো এটা তো তোমারে আবার যখন পরীক্ষা করতে দিব, এক্সরে করতে দিব, তখন বুঝতে পারবা না। তাই এইটার জন্যই তো আমি তোমারে কইছি যে দেখাইতে যাইতে লাগবে। হ্যাঁ, তোমার 700 টাকা লাগে এক্সরে করতে, তোমার কোমরের এক্সরে করো, যেখানে দিয়ে এক্সরে করো, ওটা মিনিমাম 700-815 টাকা লাগবেই। পারিবারিক চিকিৎসা, ইয়েস। মানুষ যদি টাকার ভয়ে আর ডাক্তার না দেখায় তো আর শরীর ঠিক করতে লাগবে না। That's alert and sharp and very well played. Oh, super fine. Sabdip Dey. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. তারা যে দাদারে যে এলোপ্যাথি নাকি হোমিওপ্যাথি দেখাইছে, কমলো না কেন তাইলে? তারার দাদারে তুমি যে কইতেছো দেখা কমে নাই, এখনো ভালো হয় নাই, কেন কমবো? তো তারা ম্যানেজ করতে পারবো এইখানে এখানে হোমিওপ্যাথি মাসে 4000 টাকা ব্যবস্থা করতে, প্রতি মাসে 4000 না হলো 2000 টাকা মাসে পারবো ব্যবস্থা করতে? যদি সামর্থ্য আছে তো অবভিয়াসলি আইসা করে যাও, সামর্থ্যই মানুষের মেইন। রুবির কি তুমি ভাবছো বেমার ভালো হইব? এটা সারা জীবন তাই ট্রিটমেন্টে থাকতেই লাগবো, এটা নিরাময় নাই। এতটুকু বুঝ হয় নাই তোমার এতদিনে। এই বেমারের সম্পূর্ণ চিকিৎসা কোনোখানেই নাই। এই বেমার একটু ভালো হইব, আবার পেন হইব, ওই হিসাবে ডাক্তারের লগে পরামর্শ করে ওষুধ কন্টিনিউ চলতে থাকতে লাগবে, তাই শরীরটা কন্ট্রোলে থাকবে। কেন কি তাই শরীরে তো আর জিনিসগুলো নিজের থেকে সৃষ্টি হইব না। এটা এখন ওষুধের উপরেই টিকব, যাই আছে, আর্থারাইটিস আছে, তারপরে তাই আর যেগুলো প্রবলেম আছে, নার্ভের প্রবলেম আছে, এগুলা নিজে নিজে ঠিক হইব না, না এগুলো ওষুধের দ্বারাই চলতে লাগবে।
এলোপ্যাথি খাও আর হোমিওপ্যাথি খাও। Into the last quarter of an hour. That'll be a throw. কি করা যাব, কি করতে লাগবো, There's a real appetite from them to finally put কি this করবা, game to bed. কি করতে লাগে তোমার, কি করতে লাগে তোমার? They want to be quick here. It's breakaway time. হ্যাঁ, তো তোমার তো এই জন্যই কইছি যে যায় একবার ডাক্তার লগে পরামর্শ করতে লাগবো। But it turned out that was not the case. যেই মানুষ তুমি ঘুমাইতে পারতা না, তোমার তো যাই ওষুধ দিছে দিয়া ভালো তো করছে ডাক্তারে। That's a nicely measured pass. যে তুমি কইতেছো যে একদমই ভালো হইলামই না, হেয়ার কাছে যাই, তাইলে আলাদা কথা। তুমি হেয়ার মেডিসিনে বা হেয়ার ইনজেকশনে তোমার এখন তুমি চলার পরে চলতে তো পারো অল্প হইলেও, হেয়ার পরামর্শ যদি আবার গিয়া শুনো তোমার লাভই হইব, তোমার লোকসান কি হইব? That looks a decent ball. ভালো ডাক্তার এটা, তুমি ভাবতেছো যে এটা ভালো ডাক্তার না। Saliba promptly onto that, and that is that. সার্জারি ডক্টররা কোনো সময় উল্টা পুল্টা ইয়ে দেয় না পরামর্শ, এটা মনে রাখবা। মেডিসিনে ডাক্তাররা দিতে পারে, সার্জারি ডাক্তারে কোনো জীবন দিব না। আর সার্জারি যারা ডাক্তার থাকে ওরা পারাপক্ষে চাই যে সার্জারিটা যাতে না হোক, সার্জারি না করে যদি ভালো রাখা যায়। কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে যখন আর কোনো উপায় থাকে না তখন সার্জারিটাই করতে লাগে। এখন ভিতরে হাড্ডি ভেঙে গেছে, তো ভিতরে হাড্ডি ভাঙলে তো সার্জারি করতেই লাগবো, সার্জারি করে লোহা বসাইতেই লাগবো। এটা তো আর এমনি নিজে নিজের হাড্ডি সৃষ্টি হইব নাকি নিজের থেকে? এখনো আমার মাকে দুবার অপারেশন করা লাগছে, এখনো ঠিক হয় নাই, গত 3 দিন ধরে আবার হচ্ছে নাকি ব্যথা। হ্যাঁ bro, what a lag. Yeah, game is lagging, I told you, game is lagging. Rahima, So thank you very much, Jim, for joining me. That game brings is us to lagging. the end of our coverage. This time my game didn't lag too much, but I think your game lagged, so I know the game is lagging. But today my lag was low compared to other days as I have played the friendly match. ডাক্তারে তোমারে কয় নাই যে এখনই ফালাই দাও, ডাক্তারে কইছিল যে এটা ফালাইতেই লাগবে এক না একদিন, তারপরে কইছে যে ফালাই দাও, আজকে ফালাইবা কালকে ফালাইবা, ফালাই শেষই করে দাও, ঝামেলাই খতম, এইটা হ্যাঁ কইছে। তারপরে হ্যাঁ কইছে যে ঠিক আছে যদি ইচ্ছা, কারণ কি পয়সার কথা আছে, এখন তুমি দাঁতটা ফালাইলে ওই দিন 800 টাকা যেত, পয়সারও মানুষের দেখে না, মানুষের ভাবে যায় কি হিসেবে, বেমারে পড়লে তো মানুষ ওইটা চিন্তা করে, তো 800 টাকা ওই দিন তোমার যদি দাঁতটা পুরো উঠাইয়ে দিত, 800 টাকা গেল না উঠাইয়া, হ্যাঁ তো না উঠাইয়া তুমি কত দিছো সেদিন? ওই দিন তো খরচ হয়েছে না, কত হয়েছে? 1000-1200 টাকা খরচ হয়েছে, যাই হোক, হ্যাঁ তা 1000-1200 টাকা গেছে, তা 1000-1200 টাকা গেছে। এই ব্যথা যদি আবার তোমার 1 মাস পরে ওঠে, তখনও তুমি দাঁত ফালাইবা না, আবার 1000-1200 যাইব। তো কথা এরকমই, ডাক্তারের পরামর্শ ওই রকমই গেছে যে একবারে সমস্যা খারাপ শেষ করে দাও, উঠায় দাও। আমার এই দাঁতেরও হ্যাঁ পরে প্রথমে তো মানা করছে, তারপরে যখন পরে আগে এই মাঝখানে যখন কয়েক বছর আগে যখন গেছিলাম তখন বলছিল যেটা ফালাই দাও, এটা এখন নষ্ট হয়ে যেতেছে। তো ওই তারপরে তো হ্যাঁ যে ক্লিন করে দাও, তার বেদনা কমে গেল, এই জন্য আর আমি বললাম যে তার ছাড়ো, ফালানোর দরকার নেই, যতদিন চলে চলবো। আমার এই দাঁতের এখন যখন ডাক্তারে দেখায় কইব যে ফালাই দাও, কারণ এটা পুরো ক্ষয় হয়ে গেছে, খায় ফেলাইছে না। তো এটা আমার উপরে ডিপ্রেশন, ডাক্তার আমার প্রেশার দিব না, আমি করলাম যে না স্যার আমার এটা মেকআপ করে পরিষ্কার টরিষ্কার করে দাও, আমি এইভাবে চলো, নাকি এত শক্ত দাঁত ফালানোর পসিবলও হইব না, আমার অনেক কষ্ট হইব, জামি টামি ফুললে যাব ফালানোর সময়। এটা তো পুরো এইখানের দাঁত, কিন্তু সামনের দাঁত ফালাইতে সোজা, যেই দাঁত নড়তাছে সেই দাঁত ফালাইতে বেশি মানুষের ব্যথা হয় না, একটা নেই উঠে যাবে। এখন কমছে তো, এখন তোমার ওগুলা দিছে, ওষুধ টষুধ লাগাইছো, অ্যান্টিবায়োটিক খাইছো, তে তো এটা সারছে। তোমার তো আর সারে নাই যে একদম সারেই নেই, তাহলে ওইটা থোড়ি হয়েছে, সারছে তো। তাই হ্যাঁ তো যখন তোমার প্রথম বহুত ব্যথা হয়েছিল, হ্যাঁ এখানে গিয়ে তোমার আরাম তো পাইছো, তাই কথা ওইটাই। এখন তোমার হ্যাঁ ওই সময় তো কইছিল যে
ये धीरे धीरे पैर पे भी जाएगा, नीचे नीचे में जाएगा, इसका सेंसेशन नीचे जाता है, ऊपर से नीचे तक जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है, नार्वटा कनेक्टेड থাকে কোমরের নাকটা পুরা পায়ে অবধি। তো ওটা তো ডাক্তাররে তুমি দেখাইলে গেলে ডাক্তারের পড়া তুমি যখন তোমার হ্যাঁ তো তোমার প্রবলেম যখন ডাক্তারে কইবা, ডাক্তারে যখন আবার এক্সরে করে দেখবো তখনই ডাক্তারের পরামর্শ দিব যে কি কি উপায় আছে, তোমার কোনটা উপায় লাগবে তুমি ওইটা ওই হিসাবে চলবা। আর তুমি ডাক্তারের কাছে যাইবাই না পয়সার ভয়ে, তো ডাক্তারের উপায় করতে কে দিব? তো আর তুমি জানবা কেমনে যে তোমার এটা হয়েছে, কি কি খাইতে লাগবো, কি করলে আমার এটা কম হইব বা আমি অল্প আরামে থাকুম, এটা তো তুমি ডাক্তার দেখাইলে ডাক্তারের পরামর্শ দিব না। তুমি ঘরে বইয়াই নিজের বুদ্ধি লাগাইবা, তো তোমার কোথা থেকে ভালো হইব? এই জন্য বেশি বুদ্ধি থাকা ভালো না, একটু কম বুদ্ধি চলতে লাগে। হ্যাঁ তো তোমার শরীর একটু যদি আজকে নাহলে কালকে সবারই মরতে লাগবো, কিন্তু মরার আগে মানুষের যুদ্ধ করেই যেতে লাগবো, চাই বেমার হোক বেমার না হোক। নাহলে আজকে ভুটলা মেশো কেলিগা এই অবস্থায় পড়ে রয়েছে, টাকা খরচ করে বাঁচার চেষ্টা করতেছে, তো কইতেই পারতো না আমি বাঁচুম না, আমার টাকা বহুত যাইতেছে গিয়া। কি টেনশন, সবারই টেনশন থাকে জীবনের। তোমার খালি একই আলাপ, নিজের ঘরে আছে, নিজের ঘরে থাকতে মাসি ঘুমাইতে পারতেছে না, দিন রাইতে পরিশ্রম কইরা মরতেছে বেটি। আমি জানি না, চোখের এগুলা কালা কালা হয়ে গেছে, পুরা ঘুমাই না বলে, পুরা সব সময় করতে লাগে, সেবা শুশ্রূষা করে যেতে লাগে। এই ধরনের পেশেন্টের অল্প সময় লেগে তুমি ছাড়তে পারবা না। নিজের মাটি ঘরটা আছে, সুখ শান্তির কথাই আলাদা, মাটি ঘর থাকলে সুখ পাওয়া যায় না। সুখের মহত্বটা যে জানে সে বুঝতে পারে। মানুষের বিশাল বিশাল সম্পত্তি থেকেও মানুষের জীবনে সুখ নাই, শান্তি নাই, আছে এরকম। এত সোজা নাকি সুখে থাকা? এত সোজা? খালি নিজের ঘর হলেই সুখ হয়ে গেল? এত সোজা না। रैंक मैच पे लैग है, ठीक है, खेलता हूँ, देखता हूँ, खोलो मॉर्निंग। दे তাও বহুত শান্তিতে আছি, কারোর লগে ঝগড়া নাই, কিছু নাই, বিবাদ নাই, শান্তিতে আছি। দেলবাদ চলো শান্তিতে আছি, আমি অত ভাবি না। শান্তি হইলো মেন মানুষের জীবনে, শান্তিতে যদি মরতে পারো ওইটাই সব থেকে তোমার ভাগ্যবান হইবা। যদি অশান্তি পায় মরতে লাগে তো শেষ, তখন জিন্দা থাকার ইচ্ছা হইব। মানুষের শান্তিই চায়, টাকা পয়সা তো মানুষের জীবনে চলার লেগা লাগে। No goals as yet. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. Koller going about things with real menace. That pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. Now it's Perez. He's found a way through. ये गोल हो जाता है यार। Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's how it's a foul up for a counter attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Messi is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable.
Yamal is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And the finish! ये गोल होना ही था, इजी गोल होगा. এটা মধ্যে কাজু দাও নাই কেলে কাজু কাজু নাই ঘরে দিতে লাগছিল আইও ইও দিছো এটার মধ্যে কি কইলো রে এলাচি দেয় নাকি এলাচি দেয় সুজির মধ্যে সেন্ট এমনও ভালো হয় এলাচি না দিলেও Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for that. বিশালে পায় প্যাকেট সুজি ওগুলা একটার লগে একটা ফ্রি আধা কিলো 30 টাকা 30 টাকা দিলে দুই প্যাকেট মানে 1 কিলো পাইবা Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions. তো এখন কি হইছে তো ওনারা কই নিয়ে আসবো কই নিয়ে আইবো হ্যাঁ গুয়াহাটিতেই আনতে লাগবো ভাঙাগড়ে আনতে লাগবো Azrael Ibrahim bro, hello Indonesia, hello brother, welcome to the stream. Azrael bro, thank you for joining. Don't forget to hit the like button. जो भी देख रहे हो ना like वाला बटन जरूर दबा देना. Don't forget to do that. I know my game is lagging so much, but I still try to push my rank. Right now I'm down with 1 goal. देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं खेलूंगा लैग पे ही खेलेंगे ओहो ये गोल हो सकता था बच गया Let's go for 10 likes. Can we hit 10 likes? If anyone wants to play friendly match, I will play. And we have our very first corner. Tries to get it clear. Caicedo. And can he finish it? Messi has created 1 goal already. Oh, super find. Motherwell still behind thanks to that ये तो थ्रो इन मिलना चाहिए intercepts the throw. That's well read. And it's Messi. Messi is offering some sort of an apology there. That just required a bit more oomph to reach its target. No, that's been intercepted. Van der Vaart. Davids wins the duel this time. Oh, perfectly measured that. Oh, important interception. That's what has to be done now, no question about it. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. चल रोबर्टो कार्लोस लगा शॉट एक नहीं लगा पाया कोई बात नहीं हेलो शिव भाई वेलकम हाउ आर यू कैसे हो मजाक की बढ़िया माइक एकदम ये वाला बॉल अगर मिल जाए ये गोल कमबैक नहीं होगा लग रहा है मुझे Cross into the box. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. मौका बना था वहाँ पे And here's Park Ji-sung. थ्रो इन लैग है बट कोशिश करनी पड़ेगी And here's Park Ji-sung. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Like वाला बटन दबा दो guys if you are new.
ड्रॉ भी हो जाए तो चलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा कम से कम। Good play on the left-hand side here. लैग हो रहा है, प्लेयर मेंटेन नहीं आ रहा। Cleared without hesitation. There's the hit. No, poor contact. Nothing on the shot. साउंड सही है बट मेरे माइक पे साउंड नहीं आ रहा। There will be 1 minute added time. And that's that. Lost the match. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. Your final thoughts, Jim? It's just a bad day at the office, Peter. They look below par in all areas, and it has to be cause for genuine worry. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. তার নাকি দুও পাই নষ্ট নাকি? দুও পা নষ্ট না এক পা নষ্ট? কোমরে হে ব্যথা, প্রবলেম তো কোমরে। হ্যালো গুরু, হ্যালো দত্তা ভাই, কেমন আছো? এই তো নিজের দোষ আছে না, দোষ আছে তো। LIG 53 for 5.3 ओवर्स, 50 मतलब 10 का रन रेट, ठीक है 10 का। দোষ আছে, নিজের দোষেই আর গিয়া পয়রা পয়রা আবার ব্যথা পাইছে। कि कोलर टारगेट मैन है, बट अगर 2 CF खेलेगा कोलर, आई होप कि ये कोलर भी अच्छा खेलेगा। हिज हाइट मेड्स हिम बीस्ट एंड ऑल्सो डबल बूस्टर, तो ऑब्वियसली इसका स्टैट्स भी अच्छा होगा। लास्ट मैच हार गया, ये मैच जीतेंगे तो अच्छा लगेगा। बट ये नया फॉर्मेशन पे थोड़ा ठीक है। CMF जब से डाला हूँ तब मेरा मिडफील्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेजेंड कोलर ना कि लेजेंड कोलर ना, এটা তো এপিক কোলার যেটা আসছে এখন, অনেক ভালো হবে স্ট্যাটস, কারণ ওটা ডাবল বুস্টার কোলার না। 2 CF এ খেললে অনেকগুলো গোল পাওয়া যাবে হেডিং। And we are glad to have you alongside us for it. And expectations are rising and decibel levels are rising. अगर अभी तो विदाउट मतलब ऑफ स्ट्रीम खेलता ना, अभी तक डिवीजन 3 होके कब बैठा रहता। ऑफ स्ट्रीम मैंने सिर्फ डिवीजन 5 खेला और 2 मैच खेला था 8 पॉइंट के लिए। क्या करे, कितना ऑफ स्ट्रीम खेलूँ, अब ज़्यादा ऑफ स्ट्रीम खेलने का मन भी नहीं करता। चलो 1 गोल हुआ। मैं डिवीजन 2 में हूँ। हाँ यार, मैं ऑफ स्ट्रीम खेलूँगा तो मैं भी पहुँच जाऊँगा 2-3 दिन में, लेकिन ऑफ स्ट्रीम खेलने का इतना मन नहीं करता मेरा। मैं ऑन स्ट्रीम ही खेलना अच्छा लगता मुझे, लेकिन अब ऑन स्ट्रीम पे गेम तो कच्ची है मेरा, तो क्या करेगा, इसीलिए
Oh, टाइम easy तो लगेगा pickings मुझे there. डिवीज़न 2 या Well फिर read, nice डिवीज़न interception. 1 तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके के लैग पे। हाँ 2 फिर भी शायद अचीवेबल हो सकता है अगर ऑफ स्ट्रीम और ऑन स्ट्रीम दोनों मिला के खेलो। मिचेल मार्श 49 फॉर 20। मिचेल मार्श ओके, हाँ वो तो अच्छा बैट्समैन है वैसे। Great defending, strong and determined. And the finish. चलो दूसरा गोल भी आ गया। Scored. Hot knife through 53 butter. for 1 होके They रखा है। have done it again. How very ये smart. LSG He और just got दिल्ली it डेविल्स right. That's दिल्ली just a great डेयरडेविल्स finish, but it's down to मुझे very पसंद clever ही नहीं है। इन movement. दोनों You can टीम ही see मुझे this has पसंद नहीं है। been इसमें मेरा कोई फेवरेट प्लेयर उतना obviously है ही work done on नहीं, the तो मैं training ground. He देखा knew ही नहीं मैच। exactly where he wanted मुझे the ball and SRH it कोलकाता all came good. ये टीम ज़्यादा पसंद है। इनमें बहुत The बढ़िया trick बढ़िया is प्लेयर्स है, एकदम already that is a bit of a surprise. तोड़ फोड़ करने वाले प्लेयर्स। Motherwell are Cristiano ओ नाइस सेव, Ronaldo. वाट पास And बाय he यमाल। looked every bit यमाल की the पासिंग assured अच्छी keeper है, there. यमाल का That's very, very good. फाइटिंग You स्पिरिट can't ask अच्छा for है much पूरा। more ये than that. यमाल कार्ड ही बहुत बढ़िया है फॉर ड्रिबलर्स एंड बॉल Madrid with their कंट्रोलर्स first corner. The एंड first in the game for क्रॉसर्स either side, actually. एंड फिनिशर्स। ये कार्ड बहुत ही अमेजिंग है। And मैंने now a बहुत सारे sudden गोल chance किए, to सोलो counter. गोल्स इस कार्ड से अभी तक, Shin to shin, bicep to bicep, and बहुत he सारे wins गोल कर out. दिए और बहुत ही बढ़िया बढ़िया गोल्स किए। Back when it goes. And here's Neymar. मैं अगर This is सेकंड हाफ what ख़त्म good होने तक गोल chemistry नहीं खाया goes into the header. तो कुछ होगा। Oh, should really have made more मेरा of that. That फर्स्ट definitely केकेआर had the सेकंड element of SRH। surprise to हाँ it. कल Clearly came in when रोनाल्डो no one ने was क्या टैप expecting it, and इन it was दिया, drilled. मुझे लगा बाहर मार देगा। मूसियाला किमिक का कॉर्नर गोल। मैचेस सारे बढ़िया थे। मुझे वो ख़राब लगा रोनाल्डो ने पेनल्टी जो लिया, बहुत ही ख़राब वाला सीन किया था उसने। इतना इजी पेनल्टी लिया उसने, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शॉट मारना चाहिए था उसको, तब शायद गोल हो भी सकता था। नहीं भी होता तो अफसोस नहीं होता। इतना इजी प्लेस करने का सोचा उसने, मज़ा नहीं आया उसका पेनल्टी। बाकी चलो परफॉर्मेंस तो अच्छा किया उसने, टीम ने ज़्यादा अच्छा किया और टीम खेलेगा अच्छा तो ही पोर्तुगल कहीं पहुंचेगा। टीम नहीं अच्छा खेलेगा तो पोर्तुगल एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं कर सकता पोर्तुगल। जैसे रैमोस है, ये सब और भी जितने भी प्लेयर्स हैं सबको गोल करना पड़ेगा। कल भी किया था उस प्लेयर ने, मैं नाम भूल गया उस प्लेयर का। वो जो पेनल्टी हाँकता है तभी गोल मारता है। हाँ तो यही बात है, लास्ट टाइम भी ऐसा एक हुआ था, एक मैच में पेनल्टी हगा फिर गोल मारा। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, हर बार ऐसा मौका नहीं मिलता इंटरनेशनल फुटबॉल पे। दूसरी टीम बहुत बढ़िया खेलती है ना, डेनमार्क भी अच्छा कंपटीशन दिया। एक्स्ट्रा टाइम पे वो लोग थोड़ा फ्लैटर्ड हो गए, बट दे प्लेड ऑल बोथ 180 मिनट्स परफेक्टली। बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दिया उन्होंने डेनमार्क ने। अच्छा लगा डेनमार्क का परफॉर्मेंस मुझे, क्योंकि सॉलिड टक्कर दिया। 89 7 ओवर 42 बॉल्स पे 89 रन रेट ठीक है, 200 हो सकता है आज भी। बच गए भाई, ये गोल नहीं हुआ। पूरन 23 for 8, निकोलस पूरन अच्छा बैट्समैन है वो। 2-2 1 डाउन आ गया वो निकोलस पूरन, तो 1 डाउन प्लेयर नहीं था। नेक्स्ट मैच फ्रेंडली, ठीक है खेलता हूँ। लैग होगा लेकिन ठीक है, बट खेल लेना। बना दूंगा, रूम ज्वाइन कर लेना। निकोलस पूरन का भाई निकोलस जैक्सन, तो ये कौन सा पूरन है?
ये तो निकोलस पुरानी है ना, 23 रन जिसने अभी किया है। ये सब लीग खेलने वाले प्लेयर्स हैं। वेस्ट इंडीज़ के लिए इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, इसीलिए वेस्ट इंडीज़ टीम आज नीचे चली गई। सब सेल्फ मेड प्लेयर्स हैं, पैसा कमाते हैं, लीग खेलते पैसा कमाते हैं। नेशनलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है इनका। And it's Cristiano Ronaldo. Now it's Neymar. नेमूर Roberto Carlos. Heads it! बहुत सेव, बढ़िया सेव। That was 80 मिनट तक अगर गोल नहीं खाया तो ये मैच मेरा ही है। Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. बस बच के चलना पड़ेगा थोड़ा सा। Cristiano Ronaldo, Neymar, Fernando Torres. Adams did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. हाँ, पास ही नहीं दे पाया, पास देना चाहिए था वहाँ पे मुझे। Shifted upfield. Excellent challenge. किधर गया बॉल? Uncompromising. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. गलत पास दे दिया। Ronaldinho. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. क्लियर करो भाई, 2 गोल से आगे हूँ, रिक्स लेने का ही नहीं है। जाओ बॉल लेके आओ पीछे से। क्या रॉबर्टो, इतना सा बॉल कंट्रोल नहीं हुआ इससे। ये ज़्यादा ही एक्स्ट्रा थ्रो पास दे दिया। मेरे हाथ में आएगा तो मैं क्लियर ही डालूंगा। मैच निकालना है मुझे। देखो लैग के कारण यहाँ पे इतना टाइम लगा उसके पास बॉल पहुँचने, मेरे 𝙈𝙆𝙆 के पास। तब तक वो डिफेंस पीछे ही आ गया। हारूंगा तो लैग के कारण नहीं हारूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करे जा रहा हूँ गोल किसी तरीके से बचा लो। ये शायद गोल मिल सकता है। तेरी को बहुत लेट हो गया। लेट हो गया रे बाबा। चलो कॉर्नर पे गोल शायद मिले, हो सकता है। नहीं हुआ। लॉन्ग रेंज नहीं हुआ। हेडर नहीं हुआ। अरे भाग भाई साहब। And it's Roberto Carlos. David Villa. मतलब जब अटैक पे जाओ तभी ज़्यादा लैग होने लगता है। बॉल को कंट्रोल करूँ, प्लेयर को थोड़ा सा इधर उधर भगाऊँ, फिर गोल मारूँ, कर ही नहीं पाता हूँ बिकॉज ऑफ हल्का लैग। अच्छा हुआ कि पहले आपने 2 गोल मार दिया, नहीं तो ये मैच नहीं निकलता। 8 और 3 कितना होता है? 11 हो गया ना। 7 मैच है, एक और मैच जीतूंगा तो 14, मतलब 2 मैच और जीतने हैं 3 मैचेस में से। ठीक है, कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, अब मैं फ्रेंडली मैच है चिराग के साथ। चिराग ब्रो ज्वाइन कर लेना। मैं पहले ही बोल देता हूँ गेम लैग होगा, ठीक है? लैग नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया चलेगा। इसलिए 7 मिनट्स का रख देता हूँ। और चिराग ऑनलाइन होगा तो यहीं से इनवाइट दे देता हूँ। दे इनवाइट। 3 जन ऑनलाइन है अभी। चलो चिराग के साथ अब खेल लेंगे मैच। लैग होगा तो मज़ा नहीं आएगा, बट लैग नहीं होगा तो अच्छा लगेगा।
तो अपना ड्रिबल विबल करके आराम से गोल दे सकते हैं। सब लोग लाइक कर देना स्ट्रीम को जैसे आते हो। तो पहला लाइक गोल तो 10 है। होप सो हम लोग रीच करें 10 एंड 2.97 के लिए हम लोग को कितने 10 मोर सब्सक्राइबर नीडेड। तो चैनल पे नए हो तो हेल्प करो टू रीच 3 के सब गोल। पब्लिक हेल्प करेगी तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज देयर इज़ अ लो चांस। मैंने थोड़ा सा चेंज किया फॉर्मेशन में, CMF का हिसाब से बहुत सारे मैचेस खेले हैं, उसके बाद ये वाला थोड़ा चूज़ किया क्योंकि मिडफील्ड पे थोड़ा दिक्कत आ रहा था, बहुत गैप क्रिएट हो रहा था। तो इसी वजह से 2 AMF ट्राई किए थे, उसके बाद अब एक CMF पे ट्राई कर रहा हूँ। तो CMF पे क्या है कि स्कोल्स ठीक खेल रहा है, उतना पोजीशन मेंटेन करता है। उसके बाद सेकंड हाफ पे स्टॉइचकोविक खिलाता हूँ तो वो भी अच्छा खासा CMF मेंटेन करता है पोजीशन। तो मतलब पोजीशन ज़्यादा डिफेंस स्ट्रॉन्ग होता है, हुआ है मेरा। गोल आएगा लैग की वजह से, वो अलग बात है, लेकिन मैं ऑफलाइन जो खेला हूँ उसमें स्ट्रॉन्ग हुआ है डिफेंस। ये तो बहुत लैग है भाई, ये तो मैच हार गया। दिस मैच इज लॉस्ट। गेम शुरू होने से पहले हार गया मैं। Looking to penetrate opposition lines. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. That's been intercepted. That was well played, well stopped. तो रहीम जो आया था खेलने के लिए उसके साथ थोड़ा कम हुआ था लाइव, शायद उसका हुआ होगा, बट मेरा कम हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा है, गेम पूरा अटक रहा है। Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. No, that's been intercepted. पता नहीं कहाँ पास दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। And here's Griezmann. Oh, good ball. Yamal! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. मेरे हेडफोन पे बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा। आई होप तुम लोग को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा हो। That's just playing it safe and simple. ईयरफोन पे बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा। Looking wide. Oh, that was expansive. Oh, here's a chance. चलो उसने अच्छा ट्राई किया कर्ल करने का। Oh, the pass was sublime. The finish Curl was हुआ नहीं। substandard. What a disappointment. Motherwell still without a single shot on target. That is good alertness. गैप्स में डालना शुरू कर रहा हूँ। Costa. Can he get onto this? Saliba with the clearance. Kyle Walker. Loose ball now, and there's a जब chase तक on to दीदा retrieve बचाएगा it. तब तक ही बचेगा, उसके बाद तो नहीं बचना है मुझे। Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. There will be a throw-in. Adams can get it clear. And a shot! शॉट अच्छा था बट इन टारगेट ऑफ साइड हो गया। Zico brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. लैग ना हो तो मैं भी ड्रिबल करूं बॉल लेके, बट क्या फ़ायदा है, लैग पे ड्रिबल करने का मतलब ही नहीं है, बॉल ही नहीं मिलेगा मुझे। He was quick to react. हल्का सा भी ड्रिबल करूंगा बॉल निकल जाएगा।
इसी तरीके Well, it's से a move of great promise, but will it really prove productive? खेलते रहना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ेगा अटैक। And it's Perez. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the This others was time Lagg. and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Passing is crisp and sharp. Oh, that's fabulous. Decent hit! शॉट बना तो था वहाँ पे। Saliba makes the interception. Well, there's the clearance. Aim forwards. Perez. There will be 1 minute added time. अरे 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 जैसे तैसे Well, that's अपने very much क्यू को changed the मौका मिल गया complexion. It's also गोल changed करने का। mindsets and moods in both teams, and it had to be him. हेडर भी इसने लगाया था क्या? Ronaldo at his Sad. razor-sharp best there. That's really good anticipation too, Peter. Lucky Just goal था, instinctively bounce knew पे where goal the मिला। ball would be and where he needed to put himself. ऐसे नहीं होना, So, ये तो क्लियरेंस देना ही था मुझे। and he's blown his whistle लैग for बहुत है, half जैसे time. तैसे एक गोल So the निकाला end of हूँ, the first half, both teams have had their moments. There's जैसे been और no तेईस shortage से of निकला talking है, points. दो भी खाएगा, There's been just one goal, and that is the state of it Hight at को the भी break. खाएगा। 1-0. Through immediately. Any strong opinions on the first half? Motherwell उसके clearly are बाद benefiting from their homework. They've इसको नहीं, dealt with स्पीड anything बस्टर that's डाल been देते thrown ना, at them and have been smart on the break. डेविड को भी डाल देते हैं। Motherwell having to have the lead in a tight old game. Half-time, लाइक करोगे, 1-0. लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। फ्रेंडली खेलूंगा, अगर सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे स्ट्रीम को तो डेफिनेटली फ्रेंडली खेलेंगे। ज्वाइन करो, खेलेंगे। Substitution on the field. Number 6. Number 22. Score. That gets things going for the second half. Perez. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, हाँ, Peter. अब लैग क्यों हो Entice रहा है your भाई opponents साहब? out. थोड़ा सा See if अच्छा you चल can रहा है hold them गेम, up जब a bit पासिंग more. ठीक चल रहा है तब लैग होने का Coming on the ज़रूरत है। field. Number 11. Well, a Number glitch 2. with the rangefinder there. Evident annoyance. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. थ्रो इन मुझे मिलेगा ये वाला। Oh, smashing it out. क्या हुआ ये? Oh, should really have made more of that. That definitely had the element Offside. of surprise to it. Clearly came in when no one was भाई expecting साहब it. ऑफसाइड हो गया। It was drilled. ठीक है चलो कोई बात नहीं, गोल तो वैसे भी नहीं आया। गोल नहीं आया तो अफसोस नहीं है। Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Nice ball, and he might be in here. बहुत कंधे से ले लिया था, इसलिए शॉट लेने में टाइम लग गया। 𝙀𝙀𝙀𝙀 actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, he's done very well to take that back. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players फरहान aren't dropping टोरेस का back क्रॉस है, anymore. मुझे पता And है। that means just one thing, I suppose. हम लोगों Yeah, को भी they पता है just कि simply क्रॉस want to है engage the और counter-attack. हम लोगों ने ब्लॉक भी किया। Corner number 2 then. रॉबर्टो कार्लोस नहीं 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 अच्छा, They've scored! ये रोबर्टो बहुत अच्छा है भाई, They have come क्रॉस roaring डालने back. में और गोल निकालने में। Well, it certainly लेकिन livened राइस ने things गोल up a किया, bit. बहुत That बढ़िया। next goal now is absolutely crucial. Great corner. बट रोबर्टो And का he did जो the rest. कॉर्नर है ना, He did so well there at Heavy tracking है। the ball the way he did. He got a strong मैं forehead तो behind मैं that करता one. हूँ इसलिए मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा गोल होता है That इसके has certainly made things interesting. कॉर्नर शॉट्स पे। Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either जो way. अटैक बनाना चाहता था वो घंटा Now नहीं it's बना इस Roberto लैग के कारण। Carlos. Caicedo. Oh, it's 𝙀𝙀𝙀𝙀. And here's 𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀. थ्रो इन मिलेगा। For a throw in.
Walker gets it away. इतने चांस मिलते नहीं चिराग को अगर लैग नहीं होता, सच Of बोल course बोल in a रहा हूँ। position to बहुत सारे go to the bench मैं should the need और मौके arise. क्रिएट करता गोल्स के, Oh, good read. That's great यहाँ पे मैं कुछ positioning. कर ही So नहीं पा good रहा from हूँ। him. Can he spark a counter here? मैं और चांसेस welcomes क्रिएट it कर in. देता, He's cut it out. क्या करे It's जब clear to see लक that साथ he is नहीं है not और at गेम all भी happy साथ with नहीं है। that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. ये अच्छा रोका, निकालना चाहता था उसके Can he हाथ latch से। onto this? Ferran Torres. He tried running through him, but he was not having कॉर्नर it. मिल रहा है क्या? हो सकता है, अगर कॉर्नर मिला तो गोल हो सकता है। Corner number 3 coming up. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And here's Roberto Carlos. Ball's gone out of play. Well, he's going to be disappointed with that. And the pass is intercepted. Interesting ball. Roberto Carlos providing an outlet on that flank. Well played and well cleared. He's tried one! हाँ, ये शॉट तो अच्छा था, And somehow he managed to miss it. That On could target prove गया था। very pivotal. Chances like that just can't be wasted. And here's Roberto Carlos. इतना लैग, मैं वहाँ पे ना प्लेयर भगा पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। And that's a throw-in. Referee's had a good look and given a corner. कॉर्नर तो मिलेगा। It's make or break time now, and they're all headed for the penalty box. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. And that interception was most necessary. That was well played. उसको भी Well कई ये वाला stopped. पास He's इतना got खराब होगा away. मैं समझा ही नहीं। Roberto Carlos, Costa Curta gets a foot in here. 𝙀𝙀𝙆𝙀. Oh, perfectly measured that. Oh, well played, well played. And he's cleared it out of harm's way. And here's Roberto Carlos. He's had a hit. गुड सेव। ड्रॉ लग रहा है मैच, बट अफसोस है कि मेरा गेम इतना लैग है, जितना अटैक कर सकता था उसका हाफ भी नहीं कर पाया। Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side. मज़ा नहीं आया, खेल तो लिया बट मज़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आया। इतना लैग है भाई साहब, कैसे करूं मैं? ना इधर भाग रहा था, मैं इधर भाग पा रहा हूँ। जो पाँच सोच रहा हूँ दिमाग में वो काम ही नहीं हो रहा है लैग की वजह से। चलो रैंक ही खेलता हूँ। ये गेम इम्पोर्टेंट होगा लैग वाला, इस पे लैग थोड़ा सा कम हो तो मज़ा आएगा। लाइक ज़रूर कर देना बॉयज़, लाइक करना तो बनता है कि नहीं? प्लेयर स्टैट्स स्टैमिना स्ट्रीम चैंप अगर शॉर्ट वीडियो शॉर्ट लाइव वाला ऑप्शन लेके आता ना, कितना अच्छा लगता। स्ट्रीम चैंप इज नो मोर डूइंग गुड जॉब। उसका डेवलपर काम ही नहीं कर रहा है, या तो काम उसको दूसरा मिला है इसलिए वही सब में मज़ा नहीं मारा। अब जो बना के छोड़ दिया। अब
नो मोर डेवलपमेंट, बट जो भी हो इसने अच्छा ऐप बनाया है स्ट्रीम करने के लिए। अच्छा, तो सब ब्लिट्स पर प्लेयर लेके खेल रहा है, इसलिए अपना नाम भी ब्लिट्स रखा है प्लेयर ने। सही है। ये गोल कर सकता है क्योंकि ब्लिट्स में पावर तो है। Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. लाइक कर देना, 10 लाख तक गोल रखा है अभी तो फिलहाल, देखते हो पाता है कि नहीं। स्टार्टिंग पे ही लैग है तो समझ ही रहे क्या होने वाला है, गोल होने वाला है। Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is chance for the header, cleared without hesitation. Oh, it's Totti. It's one. ज़्यादा जोर से लग गया शॉट, इसका ही गोल हो सकता है। Quite unbelievable miss. Do I really need to tell you, Peter, that he has to do better, especially from there? थोड़ा सा लैग कम होना चालू हो जाए तो मैं अपना गेम प्ले दिखा पाऊँ। तो बॉल मिलता तो मज़ा आ जाता। They've got it again. It's good running with the ball. Well, you know, Peter, the brains of this particular team's operation is Pep Guardiola, someone who can dictate the tempo, and his appreciation of the game is a step above most. Yeah, he's a thinking man's footballer, isn't he? Indeed, and I'm really looking forward to watching him. And we have our very first corner. And he gets rid in a hurry. Motherwell have the chance to go the other way. Now it's Scholes. Well, that's beautifully weighted. Now it's Perez. He is through here. Cristiano Ronaldo. बाल का गोल है, उनका गोल था ये। 3 लाख की वजह से साला कुछ नहीं, वहाँ पे प्लेयर रिएक्ट ही नहीं किया, जब उसको पास दिया मैंने। He can run onto that. बटन क्लिक करने के बाद भी नो रिएक्शन। He has slightly undercooked that one. Bayern Munich clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. He's having a hit! Comfortable claim for the keeper. Bayern Munich certainly look a very capable counter-attacking team. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. Motherwell still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. That has been cut short. Totti. That pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. बिल्कुल भी लैग कम नहीं होना भाई, एक मैच के लिए तो कोनामी कम कर सकता है। Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Oh, easy pickings there. Totti. What's Son Heung-min? Son Heung-min! And they've got rid. शॉट लग गया वहाँ पे, थ्रो पास की जगह पे। Over to the left. He steps in, and that's the end of that. He has found a way through. He is just caressing the ball. He's had a hit. शॉट अच्छा था। That's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he रुक was रुक well के placed to deal जैसे with that. तैसे मिला के मारा था ये।
last-ditch defending, but that'll do. Oh, he's felt that, hasn't he? And now they can spring out of defence. He's seen that early. Used a certain sixth sense. There will be 1 minute added time. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And we hit half-time. Truth be told, perhaps it's not the game that many एक anticipated, प्ले but करने there की is कोशिश किया था lots to बट be वहाँ पे seen in it, lots to be taken बच from गया it. एकदम Plenty मेन for टाइम the पे key बांसुरी figures to बजाए mull over, but it remains Security goalless. staff for each block, please report to the start So room there was the immediately. first half. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if the Like second the half button brings a दबा देना change to the scoreline at the break. 0-0. लोन को देखते ही एकदम लाइव So off we go once more. हाँ हो जाएगा लैग हो So जाएगा neither कितना side होने has होते yet रहे broken through. एकदम टपाटप लैग होते रहे Adams. Dixon. Adams. Dixon. More and more pressure on the ball here. Now it's Mbappe. Foden. Very nicely done. ये गोल हो गया अरे Foden! मिस कर गया It's off क्योंकि वो target and by वो है quite a way. डिस्कलर है तो गोल Yeah, हो but सकता you है only need to look across to the sideline to see what one makes of that, Peter. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking... Foden! चलो कि जाने He's रोटी done very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 2 then. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Motherwell are looking to go forward now. Now it's Park-Ji-sung. He's found a way through. Real chance! चलो 60 मिनट पे हमने एक गोल डाल ही दिया And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. The attendance for this match was So we have the first goal. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Dixon. Adams cuts out the pass. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. क्या भाग रहा है टॉमी एडम्स भाई Now एम्बाप्पे को there's नहीं the रोकेगा तू shots. Oh, he did the hard part पीछे right, भागा जा but रहा है fluffed the finish. That was created because of good, lively movement, which pretty much dictated the pass. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. This looks very much like a shoring up of the rear guard. Yeah, and that's not totally surprising. The manager obviously felt his defence needed reinforcement. He can't afford a repeat. Number 7. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Lautaro Martinez. And he lines up a cross. Number 24. Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. Vinicius Junior.
he's bustling through here. Decent hit. He should सही put that मारा one था away. वो। Well, he's definitely kept the side in the game then. That's really good positioning. They could have doubled their lead there. It's their second corner of the game. He rises! दो भी Gets टोपी in! And there he is, the epitome of enduring excellence. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. Motherwell are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. 𝙎𝙆𝙆𝙊. Aim forwards. Park Ji-sung. Here comes the cross. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Now it's Martinez. Great ball if he can get there. ऑफसाइड And he's straight offside. अच्छा हुआ ऑफसाइड दे दिया नहीं तो भाई भुगतना पड़ेगा एक गोल खाऊंगा भी तो अभी भी यहाँ पे भी Park Ji-sung really added the width there thanks to his willingness to make the run. Can he put it away? चलो And इतना आसान गोल हो ही गया था and more. Roberto Carlos And won't miss they this are chance. cruising away. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. Added minutes has been indicated. Motherwell find a position of real strength now. That's been cut out, well played. And that has put paid to that. And it's Roberto Carlos. It's a throw in. Tuhin मिलेगा नहीं दिया What is happening now? अगर ये ओपोनेंट एग्जिट कर रहे हैं तो अलग बात है और कोनामी बोलेगा टीम मैच ना तो भाई खेलूंगा ही नहीं आज रैंक ही खेलना बंद कर दूंगा और अगर ओपोनेंट क्विट किया तो अलग बात है विन नहीं दिया ना अगर ये ओपोनेंट नहीं क्विट किया मुझे लग रहा उसने क्विट ही किया उसने पता नहीं क्या है लेट्स प्ले साइरिल विटो वेलकम टू द स्ट्रीम साइरिल विटो ब्रो I can understand only English. If you write in English, I will understand. Thanks for joining. Game was lagging. My game is lagging. Server problem. ये हारने पे आ जाते स्ट्रीम पे देखने बताने के लिए अगर जीतता तो आता नहीं है
अगर ये 4 गोल मार देता मेरे इस लैग पे तो ये देखना फिर भी तब आता, तब भी आता, तब शायद नहीं आता। अब हार गया ना तो आ रहा है। हारने पे सब कुछ जलन। They seek today to confirm promotion, preferably in style, but as a bare minimum, by way of the all-important points they still require. It is undoubtedly the biggest game for many in the crowd, and indeed for most on the field of play. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective. David Villa! फिलहाल तो बच गया। Oh, here's a chance! बहुत ज़्यादा पेंटर नहीं बचूंगा। Chance! That's a half-decent try. एक थोड़ा सा भी कम होना लैग तो भी अपना गेम खेलो। एकदम ही देखो ये कैसा लैग हो रहा है, देखो मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। There will be a throw-in. कैसे जीतूंगा पता नहीं। लास्ट गेम तो जैसे तैसे निकाल गया गोल। Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full. That could spell trouble. Pizarro! And that is doing no ये harm मिस at जो हुआ all. मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास बॉल है। मैं ऐसे घूम रहा था उसके, मुझे लग रहा था कि बॉल मिल जाओ को। Cristiano Ronaldo. Perez. That's a good run down the left. क्रॉस ही मारता हूँ, देखता In हूँ into कुछ the होता middle. है। Adams with the clearance. तो लगा शॉट, बहुत बढ़िया। We've got a goal. पहला गोल इतना लैग पे पहला गोल मिलना बहुत ही अच्छी बात है। एडवांटेज तो चाहिए। Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty एडवांटेज नहीं रहेगा combination. तो इतना लैग पे तो मेरा तो बड़ा बचेगा। They have what they wanted, the first breakthrough. They still can't get carried away. They haven't been promoted just yet. NAC Breda look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams ये offside? counter-attack, but it's मुझे a लगा long offside है, counter-attack. भागी तो रहा When था। they win it back, they're not अच्छा। wasting any time. They're तीन just प्लेयर trying to भाग get रहे the थे runners इसलिए away ऑफसाइड हो गया वो as भी quickly as possible. डिफेंडर से पीछे। अब देखते हैं एडवांटेज कब तक Messi आएगा। going face to face with his great rival. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Cristiano Ronaldo. Now the finish. शॉट तो सही लगा था, Had a swing, डिफेंडर but था it सामने। wasn't to be. Scholes really had a decent crack at that. It was a full-blooded effort. And we have our very first corner. एक और गोल चाहिए बट ये लाइन करेक्ट हो गया। Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. That is good alertness. Griezmann. Cristiano Ronaldo. It's goals! And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Kaka. A lot of space here, a real opportunity. And he's there to retrieve it. Pizarro. Now it's Griezmann. That has been cut short. Griezmann. Costa Corta. There will be 1 minute added time. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And the first 45 minutes are चलो up. फर्स्ट So हाफ the end of खत्म the है first half, एडवांटेज both के teams साथ। have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal, and that is the state of it Please at the turn break. your attention to 1-0. the screen for information.
information I think provided on the by whole the local team police. linked up very well and has been organised. Hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Motherwell happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. Substitution. There's the start of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Kaka. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Khan deals with it effortlessly. 𝙎𝙗𝙍𝙁. And it's Messi. Nicely weighted ball. That's a fabulous ball. Mbappe! And he was there to get a vital touch. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. Could be danger here. Now then, the ball's come loose. Oh, beautifully shaped ball. Oh, The good-looking attendance ball. for this match was Looks a smashing ball. 71,649. And that should be the keepers. Costa Curta. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could... Mbappe! He's done very well to get to that. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. Climbs up big! पता लग गया था जैसे लैग हुआ ना वो गोल के टाइम पे तभी पता लग गया ये गोल हो रहा है. Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, And it's been given away. It could be in here. A reprieve, albeit perhaps momentary. He's got away. And the shot! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. well, we could be headed for a scenario Easy in finish which था miss कर next दिया goal is इसने. the winner. That chance could have been it too. Park Ji-sung in acres of space out wide. It's a mighty effort! कैसा मन हो And गया. no, he couldn't find the finish. And he welcomes it in. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Messi. Oh, he's done very well to take that back. Neither of these two want to come off second best. Mbappe! Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ओपोनेंट के क्लियर नंबर पे The बहुत message is simple, कोशिश करे जा रहा है. defend this with your lives.
And it's 𝙈𝙀𝙆. Got a shot away. It's run loose. Who's going to get there? तेरी तो लास्ट मोमेंट पे भी कॉर्नर ही आना था क्या? All hands on deck for this one. Added minutes has been Should get indicated. the job done. Has a shot! Oh, fine stop from the keeper. 𝙈𝙀𝙆 actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. क्लियर कर ही नहीं पाया. Desperate defending required here. 𝙈𝙆𝙆𝙀. That's that, the end. Motherwell are going up. It is the point they needed. How would you sum up what we've witnessed, Jim? कंप्लीट हुआ क्या? हाँ कंप्लीट हो गया डिवीजन 4. नाइस भाई, इतना लैग पे खेल के डिवीजन 4 कंप्लीट कर दिया जैसे तैसे. मज़ा आया. बहुत ज़्यादा लैग पे खेला हूँ. यहाँ पे सारे कंप्लीट कर ही दिए. नेशनल टीम वाला एक खेलता हूँ, बहुत टाइम लैग से लैग में खेल रहा हूँ. दिमाग हैंग हो गया मेरा. यहाँ पे एक नेशनल टीम के साथ खेलता हूँ लेजेंड पे, थोड़ा सा अपना स्किल इम्प्रूव करता हूँ. So we're all raring to go again. In life, of course, there's so much more important than this game, and yet this game feels so important. It is crucial, imperative that the teams harbouring ambitions to go a long way come smoothly out of the blocks here, and it's all building up very nicely. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And already we're underway here. Simons. This is actually quite a courageous move, and 𝙈𝙆𝙆 ambitious and adventurous too. Simons. Memphis Depay. Offside. Offside that Hello time. भाई, hello मेहंदी, केमन अछो? Welcome, welcome. Welcome to the stream. Nice interception. His positioning was spot on. 𝙎𝙏𝙍. It's come through and he's had a quick look inside. And Dijk kept his eye on it. जमाल साला and he's बॉल there. बॉल के लिए भागने, बॉल के आगे 𝙎𝙏𝙍. भागे जा रहा है. And here's Depay. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Reinders. Simons. Engages and forces him off the ball. Now it's Perez. Shot could be on. Can he finish? चलो चलो निकाल लिया गोल. क्रिस्टियानो ओपी. Motherwell clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Motherwell have fired themselves in front. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. The Netherlands clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge.
Yamal in acres of space out wide. Dumfries. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And it's Pizarro. Yamal. He is through here. Yamal! And he can clear it away. Now it's Memphis Depay. Xavi Simons gets into some space. We've got 5 minutes till half-time. Adams did just about enough to come out on top there. Heads it! ओहो अच्छा And oh, he's क्रॉस got था that और हेडर भी completely लगा wrong. था. Motherwell were again Pizarro ने presented मिस with an कर दिया. opportunity to break and look very, very threatening. Fairman. Reinders. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Dumfries. And the half-time whistle goes. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal, and that is the state of it at the पोजीशन तो break. मेरे पास भी था 1-0. 64 पोजीशन उसके पास कैसे Under गया. attack on the first 45 minutes. Motherwell clearly are benefiting from their homework. They've dealt with anything that's been thrown at them and have been smart on the break. Motherwell leading 1-0 आज at विषम the के break. साथ ही जाऊंगा क्योंकि उसके पास स्पीड है. Substitution on the field. Number 6. Number 21. Whistle goes, and we start the second half. Number 22. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Yamal. Coming on the field. Number 11. Number 20. Reinders. David And it's Kasar Memphis घुमाई नहीं Depay. था. Roberto Carlos. He's got plenty of space out wide here. He's got away. Oh, well played. Well, he got rid because he was under pressure. Roberto Carlos. He has found a way through. There's the hit. ओह कैसे मिस हो गया. Collective इतना relief close था etched भाई. on the faces of the defenders. Certainly made himself a big nuisance in applying the pressure to force the error. गंदा मिस किया ये बहुत. Shooten. Still just a single goal between the sides. 𝙎𝙬𝙆. 𝙎𝙬𝙆 takes a look up. Nice control. Caicedo too strong for his opponent there. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. This match was David Villa. 72,306. The Netherlands showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. There is an irresistible, Good irrepressible save, look good about save, them here. not bad. I think they just Corner have to keep मिलेगा. forcing the issue, and they'll get clinical. That has been knocked clear. Caicedo. And he's had a hit. अरे ये शॉट अच्छा था. Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ऑन टारगेट ही था. गोलकीपर का अच्छा सेव, डाइविंग सेव. It's their second corner of the game. डायरेक्ट गोल करने की कोशिश करो. And now a Same shot sudden on chance to target, sorry. counter. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Ake. Up he goes!
बराबर कर दिया भाई. it! Well done. Do not write them off. Back they come. The goal scorer for A Netherlands. great delivery and a finish to match. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. That has certainly made things interesting. Well, that goal just serves to give them the momentum and psychological edge now at this stage, but for me, they've got to chase a winner. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Oh, that was vital. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Stefan de Vrij has been indicated. Now Veerman. The Netherlands have it back and can go again. And he's managed to get free. And the referee brings it to a close. Decent game of football, that. Intense, intriguing. मैं And बीट both करने वाला था sides, as it नेदरलैंड turns को. out, लास्ट unable में to be रिकॉर्ड नेदरलैंड कहीं से भी. सही है, वेल प्लेड. नेदू भाई लोगों ने अच्छा खेला. कितने पॉइंट्स का मैच है यहाँ पे? 3000. ठीक है, नेदरलैंड तो जीत नहीं पाया. अब कौन? ईरान. ईरान के अगेंस्ट जीत जाएंगे लग रहा. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibel spared in this collective chorus. And already we're underway here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, Red, nice interception. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. Shapes to shoot! Oh, nearly, but nearly is nothing. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Great ball if he can get there. That is good pressure, just hounded him off it. He's having a go! Fair attempt, just the wrong शॉट outcome. बहुत सॉलिड था. Well, the look on his face says it all. Motherwell are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. No way he was going to let him past. He's got the shot away! Oh, the ball's run loose here. 𝘾𝙃 trying to keep this in. Turns and goes back. He's gone for goal! It's loose now and they want to get it back. Ah, he's fizzed it forward. Can he spark a counter here? Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it.
Ronaldo goes steaming forward. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And through to the goalkeeper. बहुत ही अच्छा क्रॉस करे. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. He has found the way through. 𝙾𝙃𝙼𝙀 cuts out the pass. Cristiano Ronaldo. He's picked his way through. In comes the corner. Motherwell with their first corner. The first in the game for either side, actually. It's a mighty effort! And he's there to clear it. There will be 1 minute added time. And here's Yamal. Well seen, saw that. And the half-time whistle goes. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. We are glad to inform you that today's match After 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after I'm sure half-time. they will make fine souvenirs. Substitution. There's the start of the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And reclaimed it in a trice. Looking for options for movement. Oh, there's a probing ball. And that pass is somewhat less than ideal. Iran clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Gets a good foot in there. Oh, we're still waiting for a goal to report here. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Stojkovic. And here's the chance to counter. He's making a real surge on the left. Tries to get it clear. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Roberto Carlos. And he's gone looking for safety. Well, that is one way to stop him. Oh, easy pickings there. Really well manoeuvred. Played back. He's got no choice here. He had to go backwards. Great hit! Oh, that was nice, but not quite the end product required. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Number 10, coming on the field, number 23, number 15. 𝙾𝙃𝙼𝙀 under intense pressure. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner.
Park Ji-sung. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Caicedo. The pass is intercepted. He's had a fair tumble under that challenge. Referee looks at his watch and blows his whistle. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness. पहले वाला विड्रॉ हो गया, ये विड्रॉ हो गया, तो 1400 3000 तो हो जाएगा ना। 3000 नहीं होगा, 2800 के आसपास होगा। 2900। आज पता नहीं क्यों नींद आ रहा है। पंखा ऑन कर देता हूँ। हीट होता है तो और ज़्यादा लैग होने लगेगा ना, तो सब फैन ऑन करके खेलते हैं। चलो पहला मैच खेलते हैं। 1300 तो हो गया ना, 1300 बोल रहा हूँ, 1200 तो खेलते हैं अपना पहला रैंकिंग मैच। न्यू एपिक्स लाइक वाला बटन दबा देना। मिल गया ओपोनेंट। चलो पहला रैंकिंग मैच खेल ही लेते हैं आफ्टर 1200। KBFC IPL এ কার সাপোর্টার? আমি সাপোর্ট করি কলকাতাকে, তারপর SRH কে, আর এই দুটোকে সাপোর্ট করি। মুম্বাইকে তো অত করি না আমি, কিন্তু মুম্বাই রোহিত শর্মার ব্যাটিং দেখতে আমার ভালো লাগবে। বর্তমান KKR SRH ভালো টিম। আর রাজস্থান রয়্যালসের আমি খেলা দেখি, কারণ ওই টিমেও ভালো ভালো ব্যাটসম্যান আছে যাদের ব্যাটিং দেখে ভালো লাগে। ওই টিমেরও আমি খেলা দেখতে যাই বা দেখি টিভিতে। বাকিগুলো টিমের অত আমি দেখি না, মজা লাগে না। অত ভালো প্লেয়ার আমার নেই ওই বাকি টিমগুলোতে, অত খাস প্লেয়ার। এই কয়েকটা টিমে T20 বহুত ভালো ভালো প্লেয়ার আছে, দেখতে মজা লাগে। Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set. लैग भयंकर है, हारने का सिचुएशन ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, And already we're underway here. खेलते रहना है। He's having a go. Marvelous goal. ये तो ब्लिच कलर They मेसी would का have been शायद looking at कल him मार to के गोल produce the कर दिया। goods, and that was very kind of him to oblige so early. What a delicious goal, stroked it लेकिन like मैं a कौन सा कल maestro. मारूंगा It's इस फ्लैग almost पे? poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Motherwell are already chasing the game. They didn't मेरा envisage गेम ही that. नहीं चल रहा, तो मैं कहाँ से गोल करूँगा? That's just playing it safe and simple. And he's picked out the run. Messi fiddles it through. Pires providing an ये outlet पास on that अच्छा flank नहीं हुआ। and reclaimed it in a trice. It's a pretty loose pass. Costa Curta is looking to set free a runner. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Irwin spots it and intercepts. Guys, like वाला बटन दबा देना। Don't Motherwell forget to really hit the can't go like chasing and this game too subscribe soon. Any button. rash decisions now could see them lose it. आरो नेट स्लो करना। कहाँ He's नेट a स्लो? player who नेट स्लो ना, has मैं मोबाइल defined खराब a था। generation.
মোবাইলের পারফরমেন্স ডাউন হয়েছে সেজন্য গেম চলছে না অন স্ক্রিন অফ স্ক্রিন ঠিক চলে অন স্ক্রিন চলে না স্টিল আমি খেলে যাচ্ছি Looking for the run. Just more than 15 minutes till half time. না খেললেও হয় বাট খেলছি তাও Pirlo cuts out the pass. Van der Vaart gets his pass away. Quick look, then plays it in. And out it comes again. Oh, here's a chance! Now, who's going to be first to this? And he's straight offside. Van der Vaart. Oh, this looks sharp. Now there's a fine ball. It's Cristiano Ronaldo! Costa Curta gets it clear. Lizarazu. 𝙈𝙆𝙆𝙀 cuts it out. And he's there to make the challenge. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Looks for the finish! And collective relief etched on the faces of the defenders. There will be 1 minute added time. Into stoppage time, very little left on it. Pires. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And the whistle goes for half-time. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And, well, there was a genuine flow about the game. Most importantly, there has been just one telling moment. It's still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. देखते हैं सेकेंड हाफ में कहीं से गोल निकल सकता है क्या इतना लैग पे Motherwell really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just look how terrible pass. नहीं निकल सकता क्या पास देना चाहता था कहाँ बॉल गया लैग के कारण He picked his spot expertly. No other outcome there. That was bang in the corner. Unstoppable. Things starting to look very comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? No, again, there's no way through. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And the counter is on. Great position here. Chance to shoot. फिर भी गोल नहीं हुआ भाई इतना स्पेस था इतना लैग हुआ कि गोल होना ही नहीं पॉसिबल ही नहीं हुआ गोलकीपर ने रोक लिया Dembele gets into some space. Quality ball. 𝙈𝙆𝙆𝙀. The attendance for this match. They'll want to make the most of this turnover. He's in plenty of space here. And a header! Tries to get it clear. 𝙈𝙀𝙆𝙆. Roberto Carlos. They've got to be quick moving this forward. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Pirlo.
Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. The movement was good, but the pass lacked authority. Chance for the header! चलो एक गोल कम से कम कमबैक हुआ. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. This is threatening to become a really good game. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go now. Ronaldo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. The less said about that pass, the better. They've got to make this nice and quick. Caicedo. प्लेयर को रुक जाता ना, ये सबसे Costa बड़ा gets खराब across चीज to है. intercept that. Costa clears. Davids. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And that should get the job done. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, easy pickings there. He could be in here. Look, it's a run defence's dislike, but the timing has to be spot सर ये on. तो एरर ही नहीं मारा. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. जो भी था वहाँ पे वो एरर ही नहीं किया. एग्जीक्यूट ही नहीं किया. एग्जीक्यूट बोलते हैं ना इंग्लिश में, एग्जीक्यूट. नया शॉर्ट वीडियो डाला है गाइस, चेकआउट जरूर करना, अच्छा लगेगा तुम लोग को देख के. Substitution in progress. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. And they're back on the ball again. Added minutes has been indicated. Dembele in acres of space out wide. बॉल के पीछे भागते रहा. And it's 𝙎𝙍𝙍. Rummenigge. Now who's going to be first to this? Could be danger here. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided. वन आवर ओनली. 9:23 7 कितने बजे से स्टार्ट किया था मैंने? 7:30 से स्टार्ट किया. स्टिल इट्स 1 आवर ओनली. टू आवर 6 हुआ. बाथरूम करके आया.
ফ্রেন্ডলি খেলবে নাকি? ফ্রেন্ডলি খেলে লাভ হবে না, তোমার ল্যাগ হবে। অফ স্ট্রিম খেললে ল্যাগ হয় না, অন স্ট্রিমে ল্যাগ হবে। দেখে নিতে পারো খেলে, আমি রুম বানিয়ে দিচ্ছি, জয়েন করে নাও। এই জন্য আমি আজকাল খেলছি না, জাস্ট আমি নর্মাল স্ট্রিম করতে আসি আর কি। জয়েন করো শ্রমিক ব্রো। আমি তো সুজি খাইছি, আমারও তো খিদা নাই। সুজি খাইছি, আমারও তো খিদা নাই। সুজি তো আমিও খাইছি, অতটা ভাতে তো হইব না। না তুমি খাইছো, তোমারটা তুমি দেখো, আমারটা তো আমি দেখছি, আমারও তো লাগে না ভাত, আমি এতটুকু খাই না। দেখ এতটুকুর মধ্যে আমি আদাই খাম। হ্যাঁ আদাই খাইতে পারবো আমি, বহুত আছে, একজনের বেশি আছে। বাকি তুমি অল্প বসায় দাও তোমার লাগলে, আমার তো এতটুকু হয়ে যাব। কি তরকারি আছে? ওই যে সজনা আছে আর ডাইল নাই? ডাইল আছে, হ্যাঁ ডাইল হলে হয়ে যাবে আমার। সজনা ডাইল আর আলু পটলের অল্প তরকারি। আলু পটলের তরকারি আমার লাগবে না, ডাইল হলেই হবে আমার। আমি খাইছি সকালে আর দুপুরে। না না, একবারে দমু ভাত খাওয়ার সময়, আবার আলাদা আলাদা করে কে ধুইতে লাগে? এখানে রেখে দাও, আমি একবারে থাল ধোয়ার সময় সব ধোয়া দেব। ভালো লাগে না, এই ডেলিতে রাঁধতে লাগে। রান্না একটা सबको इनवाइट कर देते हैं, कोई भी आएगा खेल लेंगे। ये CMF पे कैसे खेलेगा, लेट्स चेक आउट। তোমরা রান্না আছে, তাও তো রাঁধতে লাগে। সজনা তো খাবি? খায় নেমু অল্প। সজনা কুমলা পাতলাগুলা, পাতলাগুলা তো খাইয়া তো মজা লাগে না, চাবানোই যায় না। মোটাগুলা তো অল্প চাবানো যায়। Astro Broad, Tic Tac Shock, Speed Drum Burst.
দিদিয়ে মাটি কালার ডাল দিছিল Welcome to মাটি those কালার ডাল who দিছিল have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions মাটি কালার ডাল contributing আবার to কি a দিয়া হয় আবার fantastic atmosphere in the stands. না This খালি really মাটি is ডালাই the place to be. আলু ভাজা Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. আলু ভাজা আমাদেরকে ইয়ে দিছে ডাইল আর আলু ভাজা Perez is wide and looking to get onto this. They've got to be quick moving this forward. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Pizarro. Davis kept aware, and it is reclaimed easily. Jim, which player is best equipped for this game? Well, 𝙈𝙆𝙆𝙆. Well, this guy, 𝙈𝙆𝙆𝙆, Peter, certainly is a very exciting talent. A natural right winger. We all know about his technique. He's very impressive with his decision making too. And when you consider that his job is about supply, it's all about end product. He's become actually quite good at that. His ball retention is quite strong. And when you've got that in a wide player, you're onto something. Well, quite no argument from me on that one. And he's managed to get free. That's good defending, very good defending. He's shifting through the gears, shapes to shoot! It's loose now and they want to get it back. Tries a shot! And the ball's come loose here. Now it's Osimhen. Oh, that looks a cracking ball. Face to face with the keeper and the finish! What a he's bad managed finish. to get it all wrong. He looks so composed until the moment he pulled the trigger. I still think he can't believe he didn't put it away. If you have just joined us, well, you've missed no goals. And here's 𝙈𝙆𝙆𝙀. He's found a way through. He's got the shot away! Well, that is commitment to the cause. Zvola with the corner, there first. Sayan getting this one clear. Neither. He's having a hit! And no one is overly concerned about that. Yeah, it seemed the right range, and I guess it was worth a try. Beckenbauer. Zvola look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Now it's Cristiano Ronaldo. There's the hit! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught on it here. Beckenbauer defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Caicedo. Passing is crisp and sharp. That is good strength. Davis did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That's a little off target. Lukaku, Del Piero, Pizarro. No, that's been intercepted. Davids. Dixon. Some good work on the right flank here.
Caicedo is there, and he can get that clear. Great chance! It's in! Look, there are always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break... And there's the end of the first half. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Substitution on the field. Number 6, number 14, 𝙬𝙁. Here's the start of the second half. 8, Perez. Motherwell can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Cristiano Ronaldo. 𝙬𝙁𝙆𝙀. Coming on the field. Number 11, number 𝙬𝙁𝙆𝙀. 2, Roberto Carlos. Number 18, 𝙤𝙀𝙆𝙀. And Offside he's कैसे straight हो गया offside. David Villa. And it's Lukaku. Motherwell come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Saliba calmly anticipates. That pass has been well intercepted. Well timed, excellent interception. And here's Park Ji-sung. Keeper's ball. A lot of space here, a real opportunity. Well read, nice interception. Let's a look and place it forward. David Villa. David Villa! He scores! They have done it! They have their equaliser! Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it will happen. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. 71,898. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. Oh, good read. That was well played, well stopped. Cleared away. And now a sudden chance to counter. Park Ji, decent hit! Has another goal! He's got a goal! And the game is well and truly turned on its head. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Well, to his credit, he managed to ghost into space to finish things off, but the failure to spot him was ghastly defence. Motherwell get themselves into the lead. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Hits it first time! Now who's going to be first? Oh, what has happened here? There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? It's
That's a sharp pass. And here's Purkait. Byrne simply refused to be outdone there. Davids. Oh, that's such a good run. More of that. Chance for the header! Oh, it's fallen kindly here. It's in. 2 up now, and they are cruising. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. And that's definitely not his best. And it's Lukaku. That has not gone well. Oh, that's a key interception. There will be 5 minutes. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. He's in plenty of space here. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. That's really well manoeuvred. 𝙎𝙆𝙆𝙀. Nice interception. That's that. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that.
খেলবি হ্যাঁ খাই নিব Welcome one and all. We have perfect blue skies and Hello, quite a everybody, contest and welcome ahead to of us. today's This match. really is a feel-good football match. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. And already we're underway here. He's had a shot! Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, I really like this lad, 𝙎𝙬𝙍𝙀, a lot. He isn't the biggest, but he's known for having a big character that makes up for that. He's brilliant in boxes and he can outmuscle a... In for a header! That's just playing it safe and simple. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. That has not gone well. He's tried one! Oh, that was a brilliant save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Still goalless. 𝙎𝙼𝙆𝙆𝙀. Oh, that's fabulous. And he's been shifted off it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Stojkovic! Brilliant goal. That is a special one. He's got himself an absolute peach. And that is stunning, just too hot to handle. That is just a top-drawer finish. He was always in control and couldn't have placed it any better. So the first moment of real significance. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And the shot! It's run loose. Who's going to get there? Oh, what has happened here? Out of play for a throw. Too much on that, it's gone out. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Decent hit! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Shot could be on. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. 𝙎𝙼𝙆𝙆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 
And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And a header! अरे ऊपर से निकल गया. Oh, surely that deserved a better outcome. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. There will be 1 Stood minute up well at a to him time. there. He's had it taken off him.
And the first 45 minutes are up. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And while there was a genuine flow about the game, most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. So your views on the first half? Haven't played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game. Las Palmas lead by 1-0 at half-time. It's been a good display from them so far. A stable start to the game, and they are in a goodish place. First half is behind us, and the score is currently 1-0. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Las Palmas carrying a 1-goal lead. Coming on the field, number 4, Costa Curta. number 7, Guti, number 18, Erling Haaland. Showing great feet there. And he's surging through. Number 10, Messi. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Las Palmas are still that goal to the good. A nicely aimed pass. Haaland. Engages and forces him off the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Pass is just off target. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. And he's had it nicked away. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Yes. Chance here to counter. ক্যামেরাটা বন্ধ করতেছ কি বন্ধ করা ভাত জ্বলছে নাকি Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Haaland really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Cleared without complication. Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. He's having a go! And he has kicked it out somehow! Guti actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Las Palmas with their first corner, the first in the game for either side, actually. It's a mighty effort! And oh, he's got that completely wrong. And smartly reclaimed. There will be 1 minute added time. 1 minute to add, according to the board. And time is up. Las Palmas have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Yeah, clean sheets.
So hello and welcome one and all on a night which is anything but welcoming. The rain is tumbling down here, you can see it against the floodlights. It gives an added sense of drama to a game which was already in itself deemed dramatic. The conditions here will play a substantial part. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. So that's got things underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, it's the boy everyone is talking about. This guy, Rodrigo, seen by many as being one of the biggest Brazilian talents of his generation. Now, just think about that. I don't really need to add anything extra. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. And that's put paid to a promising move. And here's Mbappe. Mbappe! Byrne gets it away. Camavinga. Now it's Rodrigo. Rodrigo! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Rodrigo deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Koundé. Las Palmas, so far providing no real test at all for the goalkeeper. And Koundé. De Ligt. That's a lovely, neat pass. He's picked his way through. Neither of these two want to come off second best. Camavinga did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Lamine Yamal never really looked sure of what he was doing, and by holding on to it for so long, he nearly lost it. And the shot! And that is certainly not what he had in mind. Oh, I'm not sure what he had in mind, and I don't think he knew either. Costa Curta. And it's Perez. He's through here. 𝙀𝙀𝙁 swept in. And that has been clubbed away. Fran Garcia. Rodrigo. And he was quick to react. Yamal. Oh, now here's an interesting matchup. And Koundé. Scholes. Crossed in early. Tries to get it clear. Brahim Diaz. And here's Mbappe. Perez. Cleared without hesitation. Bellingham. Now it's Mbappe. It's a decent chance to counter-attack. And here's Mbappe. Oh, that's fabulous. Oh, what a pass! And that is going to be the final action of the first half. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break, and the game remains goalless. It's been even so far. How would you review the first half? Well, this has proved a very frustrating day so far, especially for the strikers. Nothing has been created for them. I think the service has been extremely poor. So they head in no further forward. The score here, still 0-0.
substitution on the field. Number 11, Rodrigo. So off we go once Coming more. on the field is Well, number I suppose 7, from a defensive Vinicius perspective, Junior. Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Perez. And it's Scholes. Scholes. Bellingham. Camavinga. Vinicius Junior. Vinicius Junior proves just a little bit too strong. Goalless still, neither side really getting onto the front foot. Costa Curta. Well, played right into his path. Real chance! And still, we await the first attendance for breakthrough. this match was Lucas Vázquez 71,550. kept his eye on it, and he's there. And here's Brahim Diaz. Stojkovic. Chance here to counter. And it's Scholes. Perez. Perez going face to face with his great rival. And here's Mbappe. Mbappe! It's in! There is the breakthrough! There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. No other outcome there. That was bang in the corner, unstoppable. The goal scorer after 68 minutes is number 9, Kylian Mbappe. So we have the first goal. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. So, Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist, Peter, in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Now it's Mbappe. And here's Vinicius Junior. Opts to play it back. Played out towards the right wing. Lofted upfield. This might spell danger. He's had a shot! He scores! And there's the goal they've been looking for. The invitation was received with such a clever run, and he had that defence in utter confusion. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Number 9. Las Palmas are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Coming on the field, Davids. number 15, Scholes. Koller. Number 30, 2 added minutes has been indicated. Great hit! Now, that's fallen kindly here. And that has earned a few nods of approval from the bench.
cleared away. And we're done. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Mbappe claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. How do you look back on the game then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all.
জায়গাটা বুঝছিস বুঝবি জয়মুটি উঠে এলো হ্যাঁ
আবার 7:30 বাজে আমরা আইব কই দিও কেউ তারপরে বাড়ির সময় মারতে নি